और शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए कि हमने अटैच कर दिया है उनको? शर्म नहीं आती आपको? बट इन अ पुलिस स्टेट वेयर डिक्टेटरशिप इज writ large on the face of the proceedings, आप लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दी है। ये आप क्या वेलफेयर स्टेट में हैं क्या? नहीं नहीं, कानून समझना चाहते हैं हम थोड़ा सा। आप लोगों से तो सीखना है हमको कानून। नो 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 नो, जर्नलिस्ट हैं, आपको इतना तो मालूम होगा कि कानून का क्या क्या पालन किया जाता है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि लीडिंग कुछ होती है, बहस कुछ होती है, और फिर रिट अपील में और सुप्रीम कोर्ट जाकर आप बोलते हैं कि जज ने ये कंसीडर ही नहीं किया। वहां जज को आप विलन बना देते हैं। आपका डीजी 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 का एफिडेविट फाइल करवाऊंगा मैं। आप बताइए ना, आपका ओनरशिप का कागज बताइए ना, परमिशन बताइए, वहां से शुरू करेंगे अपन। पहले आप ये बताइए कि ढाबा आपने जिस जमीन पे बनाया था वो आपकी जमीन थी, और जो है आपने उस पे अनुमति लेकर ढाबा बनाया था, इतना दिखाइए पहले, कौन सा डॉक्यूमेंट है वो? Right. I haven't filed any of the documents to do that. The procedure that नो 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 नो, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको इतना तो मालूम होगा कि कानून का क्या क्या पालन किया जाता है और कैसे पालन किया जाता है। तो आपका पहला रिलीफ तो यहाँ से खत्म हो जाता है। सेकंड रिलीफ 7.1 अगेंस्ट द प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स, चलिए, है ना, फॉर डिमोलिशिंग ढाबा ऑफ द पिटिशनर। अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है जिसको आप सेटिसाइड कराना चाहती हैं? एनेक्शर they themselves have accepted that they have openly iron fetters on my hands. They have हाँ, तो उसको उतना पार्ट देखते हैं, उतने पार्ट पे तो ये ढाबा वाली कहानी तो खत्म कर देते हैं इसको। आपका नो 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 नो, यू आर क्लेमिंग आपने पढ़ी है 7.2, पढ़िए पढ़िए। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि लीडिंग कुछ होती है, बहस कुछ होती है, और फिर रिट अपील में और सुप्रीम कोर्ट जाकर आप बोलते हैं कि जज ने ये कंसीडर ही नहीं किया। वहां जज को आप विलन बना देते हैं। basically on 7.2 तो पढ़िए पहले, 7.2 पढ़िए। to grant compensation for the acts of the private respondents in demolishing the dhaba. I have submitted some of the case laws which goes to That is one part. But first of all, you are required. Handcuffing is one part. that. But your primary relief is, or bone of contention is, that your dhaba has been demolished and you should be compensated. And yes, dhaba issue. Yes. These words, this thing should be taken well care of by my word. I should be giving some. नहीं नहीं, वो हैंडकफिंग का बताइए ना। वेयर इज द रिपोर्ट? वेयर इज द रिपोर्ट? P5 can be seen and extra P5 they haven't done. P5 देखते हैं क्या रिपोर्ट है। P5 is the photographs. P5 is the photograph. नहीं नहीं, उसके बाद में क्या हुआ? P5 रिप्लाई क्या कहता है इनका? हाँ हाँ ठीक है, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। नहीं नहीं नहीं, पहले तो हैंडकफिंग किस खुशी में की है आपने? हैंडकफिंग का बताइए। हैंडकफिंग कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ है? किस रिप्लाई में लिखा है आपने? वेट प्लीज वेट। ये किस प्रावधान में किया आपने उसको? हैंडकफिंग किस प्रावधान में की? आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आप उसको पैदल ले जाना चाह रहे थे, तो हैंडकफ किस प्रावधान में किया आपने? उसको अपराध किया था ये तो बताइए। आपका डीजी का एफिडेविट फाइल करवाऊंगा मैं। लेट योर डीजी नो दैट व्हाट इज गोइंग अंडर द नोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पास गाड़ी उपलब्ध नहीं है तो आप जो है हैंडकफिंग कर लेंगे। देखिएगा, Learned counsel for the petitioner gives up relief in regard to compensation for demolition of dam. She submits that she is not pressing this relief. Next, however, she submits that handcuffing is a serious issue. She has drawn attention of this court to annexure P5 and P6, which are the photographs showing that petitioner was handcuffed and taken to the court. Full stop. Respondent counsel Shri Subodh Kathar, appearing for the state, draws attention of this court to para 13 of the reply filed by IA number 16378 of 2018 to point out that since vehicle was not available in the police station, therefore, looking to the distance from police station to the concerned court,
the officers decided to take him to the concerned court walking. Full stop. It is further mentioned that there was no intention of the answering respondents to lower down the image of the petitioner. Next paragraph. However, the basic issue is that under which provision of law he was handcuffed and taken to the court remains unanswered. Let Director General of the Police file his personal affidavit in this behalf and also furnish and will also furnish the report as to what action he and also furnish a blueprint for the blueprint of the plan of the action which he proposes to take against the Superintendent of Police, the then Superintendent of Police Highcourt, Thana in charge PS Bakswaha, respondent number 567 and 567. Let affidavit be filed within 2 weeks. List this case on 2 तारीख को शुरुआत करेंगे. आप ही के केस से शुरुआत करेंगे. सेकंड 11 में क्या था? क्या एक्शन लिया है? क्या एक्शन लिया उन्होंने? हाँ पढ़िए. हाँ पढ़िए, 1 मिनट वहाँ पहुंच रहे हैं. The petitioner and taking appropriate action against the petitioner and their concern take the drama looking the complaint by the petitioner निरीक्षक या हम कांस्टेबल जा सकता है क्या है हम कोई नहीं वो तो अटैच करना पनिशमेंट है क्या? देखिएगा इसमें ये भी क्लैरिफाई ऊपर अभी इसके ऊपर लिखिएगा. श्री सुबोध कट्टर सबमिट्स दैट द ऑफिसर्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द illegal acts have been attached. Director General will also explain that whether attachment is a sufficient punishment for violation of the human rights of a citizen of this country and under which provision of law cases were registered against the petitioner so that relevant FIR may be also brought on record. लाए क्या आपको? हाँ कौन सी है? चलिए अभी annexure annexure page number another R5 page number 17 R5 it's in page 17 देखने. 1 मिनट. R5 हाँ ठीक है, हम उनको उसके लिए प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. हमने तो पहले ही कह दिया. ठीक है अभी आएंगे वेट. हाँ पढ़िएगा FIR में क्या हुआ. R5 में इसमें 34(2) में है आबकारी में. ठीक है लिखिएगा. हाँ ठीक है 34(2) में लिखिएगा. It is pointed out by Shri Subodh Khattar that FIR was registered under section 34 within bracket 2 of Madhya Pradesh Excise Act 1915 on 27/3/2018. Full stop. It is pointed out that in terms of the FIR handcuffing was done. हाँ दूसरी भी बता दीजिए. हाँ ठीक है लिखाइएगा कहाँ है वो दूसरी. पेज नंबर 22. It is also submitted by Shri Subodh Khattar that on 27/3/2018. ये पहली वाली किस तारीख की थी? तो एक ही उसके लिए दो ये भी हम आपसे पूछ लेंगे डीजी साहब से. बताइएगा थोड़ा कानून हम भी समझ नहीं कानून समझना चाहते हैं हम थोड़ा सा. आप लोगों से तो सीखना है हमको कानून. And I am open to learn. And another FIR was registered under section 4A of Madhya Pradesh सट्टा अधिनियम on the same date. और तीसरी आर्म्स एक्ट वाली कौन सी है? सट्टा एक्ट में वो तो आर्म्स एक्ट में है नहीं. For as हाँ आर्म्स एक्ट की कौन सी वाली है? पेज नंबर समझ रहे हैं मैडम आप थोड़ा बिल्कुल जाइए अभी आप. And third case was registered under section 25-27 Arms Act. Next paragraph. So all these facts be explained because prima facie they indicate personal vendetta towards the petitioner in registering 3 FIRs one by one on the same date without giving any explanation that why if there were 3 offenses then why single FIR could not be registered against the petitioner.
Full stop. It will also be pointed out by the Director General of the Police that if how after applicant was taken, petitioner was taken in custody, subsequent events could have been shown to have taken place in the police custody for offense under Satta Act taking place between 19.00 to 20.30 hours and thereafter and when the subject matter of the FIR registering case crime number 0093 is also demonstrates timing of offense from 19.00 to 20.30 hours, then by two separate FIRs were lodged. Let action be taken against the SP, TI, and report be furnished. List by let report be filed by 29th December. List this case on 2nd December, top of the list. It is me. 2nd January, thank you. 2nd January 2024, top of the list. It is made clear that if report is personal affidavit of the Director General is not satisfactory, personal affidavit of Director General of Police is not filed, then this court may order for personal presence of the Director General of Police. Director General will also point out that when there is a prima facie case of violation of the human rights of the petitioner, then by exemplary cost compensation be not awarded against the police personnel to be recovered from the police officials, delinquent police officials, including the superintendent, the then superintendent of police, Shatarpur. Serial number 3, Sri Sharat Gupta, 8. आप लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दी है। ये आप क्या वेलफेयर स्टेट में हैं क्या? आर यू फंक्शनिंग इन अ वेलफेयर स्टेट और इन अ पुलिस स्टेट? उसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, एक्ट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट पुलिस ऑफिशियल्स डेमोन्स्ट्रेट दैट India is still not a democratic country and citizens are not living in a welfare state but in a police state where dictatorship is writ large on the face of the proceedings. Serial number 3, Sri Sharat Gupta, 8. और शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए कि हमने अटैच कर दिया उनको? शर्म नहीं आती आपको? Next, please. Serial number 3.